Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Like, comment, share की बात नहीं करेंगे. No anymore in my videos. Anyway, what we have told yesterday, let's see what happens. What happened? How did we trade? Okay. And how market actually confused everybody, because it was like, looks like an event day, because Nirmala Sitharaman's madam's interview was around like 4, right? I didn't monitor it, of course, exact timing and all this, but it was dependent on her announcements quite a bit, and that is the reason you might have seen a very huge fall, especially after 130 by FIIs and all those. And the reason is they might be, I still need to see what she has said because I've been busy somewhere else. But I think there might not be anything which is probably a great relief to FIIs in coming future, right? There are a couple of things which were tabled, but I don't think any action has been taken on that. That's the reason this fall. So this is entirely event-based fall. But what we, even if you minus the news and everything, as everybody says that stock market anyway discounts the news and all those, what we discuss in terms of price action. In terms of price action, I told you that I have two sell zone consecutively every day, and one sell zone is inside the other. And this is a very powerful pattern as per my trading style. So it would be really very difficult market to cross it and sustain upside. And that is the reason today I took trade in Nifty on this candle, not in this, on this candle, because actually if you look at it, it's open inside the sell zone, almost try to go a little bit up like 2-3 points and then started coming. During that time, if you see Bank Nifty, okay, this we need to take a little bit. So if we see during that time, Bank Nifty was ideally going up. Okay, Bank Nifty was going up and it went up to almost 150-200 points, I think, but still Nifty was coming down, and that is because of this Jones actually. Okay, and we have taken sale. Our target was here, but market actually gave you more money. If you see, market target mein ruka hi nahi, and there is no green candle above this level. Though I have basically drawn a chart in the group for this, because this was our confident trade. Itna to target to aana hi tha. But one thing also I told in the video yesterday, if market is behaving like this, you are not going to initiate buy until market reaches this buy zone, which is 18,200. I've gave you an extremely powerful level of 18,190, if you guys remember. 18,190, and I said it would be a touch and go level. Okay, and this is what happened. But did we take this trading? Probably not, because in the live I updated in the group saying wait for 160, because the way market was falling, though it was a touch and go level as per our level calculations. Okay, if you look at this, a beautiful level. यहाँ से 190 से यहाँ तक अपना target था, 280 तक, almost 90 point का target था, but we did not take this because it was, I think ये over trading हो जाता first of all, and the way market was falling, I was looking for another leg up to 160. 160 आता तो मैं 100% buy करता, but यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी. But there was a level. If you have seen the video yesterday, and remember, I very clearly told I have a very powerful level at 18,190, and market went from 18,186, 87. If you see, right, exact touch and go. Anyway, and then the rest of the things so is drama in market, and 18,300 straddle gas. People who have opened, and if you have not closed, I have not closed it personally. We have collected 250 points, and I told we would start doing adjustment if Nifty closes below this level, below this buy zone and below this black level, right? Correct. So it is time for adjustment in Nifty, the adjustment that we will do tomorrow. Okay, and my view is market will not fall big tomorrow. Even if it falls now, it will recover. That is what my view is. So I'll tell you tomorrow's trading. So जो हम trading market अगर नीचे जाता भी है, you don't need to bother. Okay, you don't need to bother. What we are going to do is when market actually reaches around this level, 18,000 के आसपास, you are going to sell 18,100 का P.
Okay, we are not selling C. We'll do a ITM PE sell, okay, tomorrow. ठीक है, so 18,100 का PE अपन सेल करेंगे कल if market is around 18,000, and we would see that whether we are, so tomorrow the adjustment that we are going to do for a P side, because it is always safer to do a C side adjustment for sure. Okay, 18,100 C sell karenge to better hoga, but I'm not doing that. I would prefer to sell 18,100 का P the moment market reaches around 18,000, 18,020, 30. यहाँ से market reverse कर जाएगा कल. Okay, most probably. I'll tell you tomorrow's trading. 18,100 P का sell करेंगे because this is a little bit aggressive ITM P selling position just to get more premium. You have to cut it basically yesterday itself. Everybody is clear? You have to cut it on Wednesdays itself or probably Thursday morning. But I would prefer to cut it on Wednesday because if I have to do another adjustment, I will do on Thursday. But I'll take the profit on Wednesday and go. So this is like my backup plan tomorrow. Okay. Anyway, the trade still is not in loss even after such a huge fall. Okay. 18,350, 250 points premium collected yesterday. As per my trading numbers, and today if you look at the standard values around 240, 45, it's still in profit. Okay, so 18,100 P ka sell karenge, and tomorrow we'll try to close, especially if market does not close around this day's high and it was closing below this low around this 18,085, 18,070, 18,050 kind of stuff, वहां पे हम अपना premium एक बार cut कर लेंगे, whatever premium we get. Okay, that is additional to our position. Then Thursday we'll do one more adjustment. Nifty में, Bank Nifty, this is for positional sales. Okay, Nifty में, if people would have kept the 38,300 C, you should have still taken a lot of profit. You could have taken around another 100 points ideally. But today, if you remember, when market बैंक निफ्टी में तो वैसे हमने आज ट्रेड नहीं किया. Market was at this candle. When this candle was forming, when market was here, I told कि market शायद upside नहीं जाएगा. हमारी upside की capping यहाँ पे थी, downside की capping यहाँ पे थी. Upside के capping के ऊपर market यहाँ पे ऊपर गया. Adjustment हमने क्या discuss किया था? 38,900 पहुंचेगा तो हम C का एक adjustment करेंगे, right? हम कर देते तो दबा के पैसे. बैंक निफ्टी में again दबा के पैसा मिलता था अपने को. It's a huge money, but I did not do it. I cut my C ka sell position here itself today, because the moment this candle was forming, I wrote it in the group. After taking 5 bottoms, 1, 2, 3, 4, 5, market was going up. 5 bottoms is a very, very powerful bottom. It is very, very clear that market range bound ho jayega, but fall nahi hoga. And the moment this candle was forming, no, it was a little bit bullish candle. I told people, if 37, ये हमारा dual level था 38,380. I said if 38,380, 1 second, मैं एक बार ना 1 second, मैं एक बार ये हटाता हूँ, and I'll show you what I meant actually. Okay, so the moment 38,380 is crossed, I told people to buy for 150 points up to this sale zone. This is what I have clearly written. After that, I was not available in the group because I went to walk. So 38,380. But from a learning point of view, guys, do you guys remember this double buy stuff that I have taught you in the second leg? If you guys remember it, you should have taken it. And especially when I have given the view, the 38,380 के ऊपर market 150 points definitely जाएगा. So this buy should have been taken today. Okay, this buy is like magic. I don't think this is after very, very high time, I have seen a 90-degree movement in Bank Nifty. So I was very much sure that market यहाँ पे sustain करेगा नहीं. But this fall was blessing in disguise to people. I didn't trade all this. Okay, I didn't trade. So we have only one trade in Nifty, and then we close today's stuff. Then everything was positional. But just from a learning point of view, market was going on the upper side, almost 250, 300 points. It is retracing, did not cut the low, right? First leg, second leg,
market crossing the second leg, you should have bought here up to this. This is the buy, this is the bias indicator. Second leg पे ये क्रॉस पे buy होनी चाहिए थी आपकी. This was like 100% confident buying in Bank Nifty. Okay, this is like 100% confident buying in Bank Nifty, right? We could have ideally taken this. Anyway, this is from a learning point of view. हम कल के ट्रेडिंग में आ जाते हैं. कल के ट्रेडिंग में अगर आएंगे, मंडे की ट्रेडिंग में, तो हमारी ट्रेडिंग कैसी होगी? आइडियली हमारी ट्रेडिंग जो होगी, ओके, मेरा जो व्यू है, जो डाउन साइड की कैपिंग जो होगी बैंक निफ्टी की, वो ये है. बाई जून तो मेरा यहाँ पे है, बट चलो भावनाओं में मार्केट बह भी गया, बिकॉज दिस फॉल वाज सो बिग, थोड़ा बड़ा फॉल हो भी गया. 37,785 अगर आपको मिल जाता है मार्केट में, एंड स्पेशली इन फर्स्ट 1 आवर अगर मिल जाता है, विल गो फॉर ए बाइंग. दिस इज 99% बाइंग. जो बाइंग लेवल मैंने कल आपको निफ्टी में दिया था, टच एंड गो, this also might be a touch and go level, 37,790. okay, and market recover करेगा, 100% रिकवर करेगा, एटलीस्ट 38,150. ये जो गैप होगा ना, ये फिल करेगा. okay, that means we are talking about 350 पॉइंट्स की बाइंग. इट माइट नॉट बी स्ट्रेट, इट मे बी स्ट्रेट, वी डोंट नो, बट इसके नीचे शायद मार्केट कल नहीं जाएगा, एंड द रिकवरी शुड हैपन. दैट मींस फॉर इन फर्स्ट 1 आवर अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप बाय कर सकते हो. पॉसिबिलिटीज ये कि मार्केट माइट गिव यू ए स्पाइक बिलो आल्सो. इवन इफ इट गिव्स स्पाइक, नो, within 1 hour it will come back, so it will not be a loss making trade at least. So this would be our extreme trading tomorrow. However, I would be comfortable from buying from this zone. So that means 37,900 के आसपास. okay, this is 800, this is 900, 100 पॉइंट का रिस्क है. 37,900 के आसपास, 850 के आसपास I would also be comfortable in buying. सो आप देखोगे ग्रीन कहाँ पे मिल रहा है. यहाँ पे ये जोन भी अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल रहा है, आप बाय करो. यहाँ तक तो लेके आओ एटलीस्ट 38,150. ये टच एंड गो लेवल है. दिस इज टच एंड गो लेवल 37,780. ओके, मार्केट तो बना देता हूं मैं उसे. मार्केट आइदर इज डज लाइक दिस, सो यू गो फॉर ए बाय. ओके, और मार्केट बेसिकली फॉल्स, whatever way it falls, it doesn't matter. First 1 hour में मार्केट अराउंड 10-10-15 आपको यहाँ पे मिलता है. टच एंड गो में यहाँ पे बाय ले सकते हो. अगेन सेम टारगेट, रेस्ट इज बोनस. ओके, वेरी वेरी हाई चांस, वेरी वेरी हाई चांस कि मार्केट अगर ये लेवल जो आज का डे का लो है, इसको सस्टेन कर जाता है 15 मिनट, तो वेरी वेरी हाई लेवल, इट कैन गो अप टू 38,380 ऑल्सो, जो हमारा डू एंड डाई लेवल था. वेरी वेरी हाई पॉसिबल. ओके, बट इसकी गारंटी में नहीं दे रहा. ओके, ठीक है. नाउ मार्केट इफ दे आर ओपनिंग अप, गैपिंग अप, ओके, ये हमारी सेल जोन है, और ये सेल जोन के टॉप से आपको सेल करना है. एक अटेम्प्ट लेना है. दिस इज नॉट लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट सेल, बट एक अटेम्प्ट आपको लेना है 38,430 में. ओके, और छोड़ देना है मार्केट को. मार्केट को छोड़ देना है यहाँ तक. इससे पहले तो आपको बाइंग ही नहीं करनी. देयर इज नो बाइंग जोन इन बिटवीन. ओके, मार्केट को छोड़ देना है ये नीचे वाले का. स्टॉप लॉस जो यहाँ पे होगी आपकी ना, ये देखो, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख देना. जो जैसे में आज हमने सी में स्टॉप लॉस लगाया, इफ वी वुड नॉट हैव पुट ए स्टॉप लॉस इन सी, दिस वाज लाइक ए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मूव इन सी. मतलब आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता. 400 पॉइंट्स ये फॉल हो गया, अलग बात है, बिकॉज ऑफ न्यूज. अदरवाइज यू वुड हैव इन अ वेरी वेरी बिग लॉस, बिकॉज यहाँ पे हमारा हेजिंग पोजीशन था नहीं, इट वाज नेकेड पोजीशन. तो कल भी जो आपकी स्टॉप लॉस होगी, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी 38,500 के आसपास. इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम 38,400 टू 420, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस. वी कैन रीअटेम्प्ट अगेन, we can reattempt again, and the reattempt is not at this sell zone, only at this sell zone, but I really doubt कि यहाँ तक आएगा. I really doubt कि यहाँ तक आएगा. मार्केट यहाँ से एक बार सेल हो जाना चाहिए. तो कल बैंक निफ्टी की जो मेरी रेंज है, वो रेंज होगी 38,500 टू मैक्स 38,800, 700 पॉइंट का रेंज. ओके, 600 टू 700, ये 100 पॉइंट थोड़ा रिस्की है. 600 पॉइंट का रेंज तो आपको इजीली मिल जाएगा. दीज आर द ओनली 3 सिनेरियो इन विच आई विल ट्रेड. Above this I do not have any trade, no trade in between. However, if it actually touches, अगर आप देखो यहाँ पे प्रीवियस डे की हाई भी है, तो एक कंसाइडिंग जोन है, तो ये एक पावरफुल जोन बन सकती है. बाई चांस अगर मिलता है तो सेल कर दो बिंदास कल, बट ये होगा नहीं, यहाँ तक जाएगा नहीं. ओके, आई थिंक फर्स्ट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके नीचे आना चाहिए मॉर्निंग में.
ठीक है, दैट इज फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी क्या कर देता हूँ, निफ्टी में द रेंज फॉर मी इज 18,190, ये जो लेवल है ये बाकी काम नहीं करेगा, ये तो आज का है। 190 का लेवल है, राइट, यहाँ से दोबारा सेल आएगा, मार्केट अगर ऊपर गया भी 190 का लेवल है, मैंने बोला था दिस इज वेरी वेरी पावरफुल लेवल, 18,190 का लेवल है, 190 से आप सेल करोगे अगर मिल जाता है तो, ओके, एंड देन यू विल कंटिन्यू द सेल अप टू दिस 18,050। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 100 पॉइंट की सेल इजीली, राइट, 190 सॉरी 150 पॉइंट का सेल इजीली, ओके, इसके पहले तो बाय करना ही नहीं। तो कल का जो बाई जोन है वो 18,020 है, मार्केट कैन कम अप टू 18,970, दिस इज द लोअर कैप, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, दिस इज ऑल्सो टच एंड गो लेवल। बाइंग जोन जो है आपकी, मार्केट अगर ऐसा आता है यहाँ पे कहीं में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, इसके कट पे ही आप बाय करोगे, 18,030 के ऊपर ही आप बाय करोगे, एटलीस्ट आप 70 पॉइंट लोगे, वेरी वेरी हाई चांस इट कैन कम अप टू 140, okay, very very high chance in this case. The second scenario for me would be market is coming down ekdam straight around 10 o'clock 10:15, ये मेरे को 17,970 पे मिल जाता है, this might be a very very good recovery, यहाँ तक तो लेके आना है आपको, ओके, 970 से 100 तक, ओके, सो 130 पॉइंट्स की बाइंग, ये बाइंग आपको मिल जाएगी, मार्केट इसके नीचे कल नहीं जाएगा, आई रियली डाउट कि मार्केट 18,000 के नीचे भी जाए, 18,000 इज आल्सो वेरी वेरी साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये जोन पे थोड़ा कंफ्यूजिंग जोन है, आई एम सेइंग इसके नीचे तो मार्केट जाएगा ही नहीं, टच एंड गो लेवल है, बट ये जोन में कहीं से भी मार्केट वापस ऊपर रिकवरी कर सकता है, डोंट एक्सपेक्ट ए बिग बिग फॉल इफ मार्केट इज गैपिंग डाउन टुमारो मॉर्निंग एंड अराउंड 10 o'clock ये लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, तो 1 आवर का टाइम आपको मार्केट को देना है, ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। अपर साइड अगर जाता है तो 190 से सेल मार देना है, बिल्कुल, ओके, ठीक है, अपर साइड अगर जाता है तो 190 से अपने को सेल मार देना है, दिस आर द ओनली 3 सिनेरियोज इन बोथ द इंडेक्स, ओके, बाकी कल देखेंगे जो लाइव में देखना है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।